Hello dear students, welcome to your own channel Sreedhar Odisha. So आज हम discussion करेगा ASO High Court main पे ଗୋଟେ set. So are you ready? You should better be. It's a good morning and good morning to all of you. Please inform all your friends to like and subscribe and join the session has started. Okay, get connected, get active and share your comments on YouTube. I'll respond to them. Clear? So now let us start. तो पहले start करेगा जी देखनी हो. ASO High Court main set English हम discussion करेगा. So first of all, a few updates that I would like to share for you for your own interest. First हो जी RI mains exam. You know how important it is. It's a question of your career. Yes or no? So तापे 699 रे हमें कौन करचु offline test and टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन आम लॉन्च करछु. तो देखिनियो मॉक टेस्ट आमर रोचे ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे रोचे. टाइम इज 10:30 AM to 1:30 PM. एक्सप्लेनेशन क्लासेस रोचे मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे. अगेन इट्स 10:30 AM to 1:30 PM एंड लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल. बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी May 28 रु. सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. जॉइन एंड सी द डिफरेंस. क्लियर ना? देन अगेन आप जानी परिबे आम ASO हाई कोर्ट पई मेन टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन एंड मैराथन क्लासेस आमे वर्तमान कौन करछु लॉन्च कर सालुनी. की फीचर्स कौन रोचे अल्टरनेट डेज रे टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन रहइबो. मंडे एंड वेडनेसडे टेस्ट रहइबो. एक्सप्लेनेशन आपन को रहइबो ट्यूसडे एंड थर्सडे. फ्राइडे रे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन रहइबो. बैच स्टार्ट हलानी May 26 रु. वैलिडिटी अछि कोन टिल एग्जाम डेट रहइबो. एंड व्हाट इज द प्राइस? वेरी चीप. इट्स ओनली 999. Clear? Getting it now? So always remember. And then again एडा हम देखि परिबे एडा हमर ओडिशा पुलिस SI पे टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन विथ स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट करछु. इट इज जस्ट लाइक ए रिफ्रेशर कोर्स. तो एडी कोन होचे आर फीचर्स कोन रहइबो ना टेस्ट सीरीज रहइबो एंड एक्सप्लेनेशंस रहइबो. प्राइस इज ओनली केते 499 टिल एग्जाम डेट पर्यंत अछि. सो बैच स्टार्ट हलाने हमर कोन जून 19th रु मींस टुडे इज द जॉइनिंग. डेमो पे आसी पर जॉइन करो एंड फील द डिफरेंस केमति छि कोन नै. यू विल डू दैट राइट. एंड आपनकर जानिथिबे हमर एड्रेस जानिथिबे सदानंद भवन अछि यूको बैंक एभव अछि. एंड आवर मोबाइल कांटेक्ट नंबर व्हाट्स द नंबर 8860888870. इजी नो? सो रिमेंबर इट. एंड नाउ लेट अस लुक एट आवर सेट. सो कौन कौन रहउछि 5 क्वेश्चंस. वी नो दैट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस एन एसे टॉपिक. व्हाट आर द एसे टॉपिक्स गिवन हियर? Dream of smart cities, myth or reality? Teenage suicide, what is the solution? Human cloning, tackling the moral dilemma. So we'll discuss it. Then again, it amar hoche kono a précis on the given passage. Given passage upar हम précis रखिबा. After that, it hoche kono translation रहिबा from English to Odia. Getting it? Then it is again translation from Odia to English. And then question 5 is completely based on grammar. तो चलो हमें question 5 रो as usual start करिबा. So here we go from question 5. Question number 1. He is a close dash of the prime minister. Fill in the blanks with the correct option. One is AID. Aid means help. Aid word हमें noun रूप यूज ही परिया verb रूप यूज कर परिया. But what's the other word? AID. AID is a noun. It cannot be used like a verb. तो aid रे meaning कोन friend ही परिबो, advisor ही परिबो, follower ही परिबो, supporter ही परिबो, whatever you can use. तो एडी correct answer हबो AID. This is the word I am looking for. The word कोन होची? The word that I am looking for here is AID. Clear? Now go to question B. Sita has been crying since morning. Convert in past perfect continuous interrogative form. Past माने कोन हबो? had हबो. इंटरोगेटिव फॉर्म माने कौन होची हेल्पिंग वर्ब आगो पळे आसीबो. आको हमें कोन कहू? आको हमें कहू ऑपरेटर इन्वर्सन. तो एटा कोन करो? हैड सीता बीन क्राइंग कोन लिखाइ छी सिंस मॉर्निंग. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. गेटिंग इट? नाउ सी आई वुड इन्फॉर्म यू ऑल दैट डैश डिस्कस्ड इन द मीटिंग. मीटिंग रे कोन डिस्कस हेतियो? टॉपिक गुडा को हबो. तो एडी ऑल प्रकार कोन हबो? वाज हबो ना वेयर हबो? आई वुड इन्फॉर्म यू ऑल. एठी हमें कौन करबा? इन जनरल सेंस रे वाज को यूज करबा सब तक. ओके जानि परलो. तो एठी कौन कहले? आई वुड इन्फॉर्म यू ऑल दैट वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. आई से टू श्याम, मु श्याम को कहूची कोन? आई विल हेल्प यू. राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. एटा सेट अछि तो प्रेजेंट टेंस रे अछि. एडी टेल हबो. आई टेल श्याम दैट आई विल हेल्प यू माने कोन हबो? हिम हबो. This is the answer. Clear? Then E.
where did she buy the books पासे कले कोन हबो एटा where were the books bought by her एमती हबो clear ना so 5 questions done by us okay जिबा वर्तमान 6 को use the following words in sentences of your choice what are the words given tenor and tenor so first of all tenor is a noun our meaning hoji gote 10 टंकिया note a 10 rupee note okay we call it in general tenor and tenor meaning कोन intention हे परिबो both of them are noun तो मो कहबी आई हैव नथिंग बट a tenor in my pocket मो पॉकेट केवल 10 टंकिया नोट पड़ची आउ चिल्लर किछि नाही तो एमदे tenor आसीबो tenor meaning कोन कहली implication हे परिबो किंबा कोन कहबा intention हे परिबो ना the audience didn't appreciate the tenor of his speech the speech or intention तको पसंद लागले नहीं किंबा delivery content style तको पसंद लागले नहीं use it like this getting it empty sentence उडा लिखिबो then again question number G that is कोन लिखाइ छै कहै छै she is deceptively smart it means what deceptively smart ର meaning कोन बुझिबा तार meaning कोन she smarter हबो ना dumber हबो ना both हबो मो जेमते कहि परिबी आई एम यूजिंग एन ऑक्सीमोरॉन हियर falsely true माने जिनसटा सत ना मिछ falsely true माने कोन हेतिबो मिछ हेतिबो एठी मीनिंग अनुसार हम चूज करिया पड़िबो डिसेप्टिवली स्मार्ट माने कोन जेतिके स्मार्ट देखा जाउछि सेतिके न होई पारे किबा जेतिके देखा जाउछि ताटो अधिक स्मार्ट मध्ये होई पारे बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर यस और नो तेन आंसर एठी कोन करिवो बोथ करिवो गेटिंग इट देन आई लाइक हर डैश सिंपलिसिटी fill in the blank with the correct option barbaric na barbarian तो एठी आंसर कोन करिबा barbaric हबो ना barbarian हबो गोटे barbaric and barbaric रो मीनिंग हला rustic or related to village barbarian माने कोन तर एटीट्यूड देखो जे which is like a savage तो एठी हमें barbaric करिबा I like her barbaric simplicity option A clear then again that is question number I this painting is indeed very dash fill in the blank with the correct option artful and artistic माने कोन aesthetic sense रे यूज हबो beauty sense रे यूज हबो artful रो मीनिंग हला dishonest flattery tel malice तो हम पेंटिंग रो ब्यूटी बेस रे कहूछु हम आंसर कोन चूज करबा we will choose artistic here 9 questions done right now तो जिबा आगो को let's move on here he is poor he is reliable so combine the given sentence using the correct option one is given being another is in spite of being ro meaning halla because kimba as reason sense rasibo edi reason sense rasini edi contrast sense raschi तो आंसर कोन हबो in spite of ले लिखिया केमदे आंसर लिखा हबो in spite of being poor he is reliable you have to write like this clear now sentence के the police arrived the thieves fled माने कोन दौड़ी पळेले combine the sentence using having को लगे केमदि यूज हबो ना हम तो having को यूज करबा we are going to use a form known as having plus v3 what do we call it ako हम कोन कहू हम ताको कहू nominative absolute एटी लिखियो केमदि ना फर्स्ट रहबा सब्जेक्ट जोटा फर्स्ट एक्शन रहबा तापर कॉमा देके लिखिबो having plus v3 तापर नेक्स्ट सेंटेंस dot whatever is written एटा किन मीनिंग हबो the police having arrived रहला the thieves fled you have to write like this nominative absolute रो माने कोन nominative absolute means if the second action is the direct result of the first action जेमते के मो कहबी supposing the police arrived the police arrested him जी आसला से का अराइव कला माने पुलिस एका दीटा काम कला ना नहीं त माने एटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं मतलब मो कहबी द पुलिस अराइव्ड ही रैन अवे पुलिस आसला पर से पळेला पुलिस किछि कला कि नहीं पुलिस को देखि किछि निजन से पळेला सेकंड एक्शन ता कोन ऑटोमेटिक रिजल्ट हैला ना नहीं ऑटोमेटिक रिजल्ट हेले आमी ताको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन वाले को तुम जानि पाइलो तो आंसर कोन लिखिबा ना द पुलिस हैविंग अराइव्ड द थीव्स फ्लेड क्लियर now L I am just going to stay at home and goof off meaning कोन हबो relax or chill answer सेमति करिवो then again M the alpha and omega of British policy was to keep the Indians divided alpha and omega means beginning and end bible जानिचो bible लिखा हेतिबो for in the beginning was word and the word was with God and the word was God and when Christ said I am the alpha and omega of all created beings माने beginning and end अंत भी में
आरंभ भूमि में जिन्हें कहूना सेमती अल्फा एंड ओमेगा मीनिंग होची कौन बिगिनिंग एंड एंड गेटिंग इट देन जीवा नेक्स्ट को Mr. Narasimha Rao always followed a Fabian policy in all political issue. Fabian policy ର meaning ହେଲା policy of delaying tactics. ଆଜିର କାମ ଆମେ ଆଜି ନ କରିକି କାଲି ପରଦିନଟେ କରିବା ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା Fabian policy. Getting it? ସେମିତି gold or silver before used for manufacturing ornament is called କ'ଣ ହବ? It is a one word substitution. The correct answer is ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଲିଖିଛ ore mineral ନା ରେ ସେୟା କହୁନି ଆର ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ bullion. Bullion. Mark that word again. That word is known as bullion. Bullion. Getting it? Next, a disease prevailing in a locality. Any word like locality likhna dekha ta ko line karchi. Locality mane it is restricted to a particular region. Particular region mane word asiba kon ati endemic. जेतले हम word लिखि pandemic जेने हम कोविड को pandemic बोली कहू pandemic. Why am I saying pandemic? I am saying it a pandemic. That is because से गोटे एरिया रे नहीं से सर्वव्यापी pan means all over but एटा कोन कहला गोटे लोकालिटी रहिले ना आंसर अब कोन endemic. Somebody is saying is epidemic means which spread regardless of area तो आंसर एटा कोन करबा endemic करबो locality sense रे. Getting it now? Remember it well. Now we'll go to next. एटा कोन हबो आर्टिकल पर यूज करबा. चलो देखो फर्स्ट कोन हबो सुपरलेटिव डिग्री द लागिवो. The tallest gentleman is a teacher हबो. तापरे the man who लागिछि रो मीनिंग हला बट पर्टिकुलर लोक को कहउछ तो the man who has a stick in his hand is the teacher's uncle. Second time reference को जेडी द रहइबो. He lives in Chennai. He has come here to attend a wedding हबो कि no the wedding हबो कारण एडी man wedding शब्द को समान अछि गोटे जिनस को रिलेट करछि. एडी ए वेडिंग रो मीनिंग एनी वेडिंग नै हम एडी ए पर्टिकुलर वेडिंग विषय कहउछि जोडी लोकटा आसीछि. I don't know who the third man is. सर एडी द का लिखले ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल पाखरे द लागे. तबरे I know the person sitting beside the teacher पर्टिकुलर जिनस आसु. Getting it? एमदे करियो. Next, I try to atone dash him by offering market price of the land. Atone पाखरे कोन लागिबो for आसेबो ना to लागिबो. Atone पाखे दीटा वर्ड আছে for होचे reason to होचे गोटे person. I want to atone for my mistake for my sins. ओ भूल पाई मु जदी atone करिया चाहूची माने for बट एडी कोन कहै गोटे लोक पाखो कहै ना yes or no तो आंसर एडी कोन करिवो to करिवो. सेम you have no authority dash instructing me as instructing माने कोन ताको डायरेक्शन दबा पई तो आंसर एडी on हबो for हबो ना over हबो. अथॉरिटी पाखरे ऑन सॉरी अथॉरिटी पाखरे कोन हबो ऑन आसी परिबो ओवर आसी परिबो फॉर्म आसी परिबो. ही इज एन अथॉरिटी ऑन इंग्लिश ऊपर गभीर ज्ञान अछि. ओके इंडिया हैज नो अथॉरिटी ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स पावर सेंस रे आसिला बट यू हैव नो अथॉरिटी फॉर टीचिंग मी रीजन सेंस रे फॉर लागिबो तो आंसर एटी कोन करिवो फॉर करिवो. क्लियर? नाउ टेक देखो लाइक एनी अदर कंट्री इंडिया हैज इट्स डैश शेयर ऑफ सुपरस्टिशन. प्रॉपर शेयर करिया ना फेयर शेयर करिवा एटा वर्ड यूजेस क्वेश्चन दा आंसर करियो सब बेले कोन FAIR फेयर करियो. डन. सो दिस इज 20 क्वेश्चंस. आई होप तुम जानि परले पिले कोन डाउट छै कोन नै यू कैन ऑलवेज टेल. क्लियर? सो बर्तमान हम आगो जीवा. लेट अस सी आ कोन क्वेश्चन जाक अछि देखिबा एठी. वेट ए मिनिट हम प्रेसिडा काई ओके हियर डिस्क्रिप्टिव इंपोर्टेंट टॉपिक प्रेसी चला पढिबा. Nationalism may be defined as a sentiment, loyalty or sympathy which binds a group of people together. चलो एडी मोटे ब्रेक टे नेली तो एडी कोन वर्ड ते अंडरलाइन करियो देखो टॉपिक हैला नेशनलिज्म डिफाइन करछि कोन as a sentiment which bind रो मीनिंग एटी कोन हबो unite. Why am I telling you this? Because प्रेसिडेंट तम निजेर ओन वर्ड लिखिबो ऑथर रो जो वर्ड जाथिबो ताको कॉपी कर लिखिबनी. मु बहुत लोकान को देखिछि बहुत पिलान को देखिछि माडुआ गुड़ाक तुम केबे मध्य कौन कर निजर भोकाबुलरी को इंप्रूव करनो. डोंट डू दैट. एटी बाइंड मीनिंग ऑफ यूनाइट सैला एंड दस क्रिएट यूनिटी अमंग देम माने फर्स्ट सेंटेंस रे लाइन पढ़ले हम टॉपिक टा जान देल जे टॉपिक टा होजे कोन नेशनलिज्म. व्हाट इज नेशनलिज्म ऑथर सेटा डिफाइन करछंदी. अंडरस्टूड ना? तापर आगु देखो नेशनलिज्म कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स व्हिच कैन बी लाइक ए कॉमन लैंग्वेज tradition, religion, race माने जाति, history or geography of a place etc. एडी कोन what are the characteristics of nationalism सेडो से डिफाइन करछि.
चला ना एबे ए जो चारिटा सेंटेंस अछि आको मु कोन करबी भांगी बाड़े की गोटे कर देबी केम करि परबी watch me hear and listen to what I am saying मु कहबे nationalism सैला consisting of basic elements like language race or history can be described as a sentiment binding people together or unifying people करला ना नहीं इमिति लिखियो जानियोला ना पॉइंट you can do that remember तापर it is not necessarily true that people of every nationality must have these basic elements in India several races language and culture contribute to Indian nationality nationalism is rooted in the popular principle of nationality अच्छा से दिरा पॉइंट को हम केन बुझिया देखो इट इज नॉट नेसेसरी माने ऑथराइज जिंसटा को नेसेसरी बोली कहि नांदी यस और नो तेन ताको तो हम एक्स्ट्रा ऐड करिया दरकार नहीं आमे देखिबा ऑथर कोडा को प्रायोरिटी दे जंदी दिस यू हैव टू यूज तो एटा कोन लिखा छै नेशनलिज्म इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी कोन जिंसटा का एलाबोरेट करबा ए पॉइंट को हम हाईलाइट करी जोडा इंपोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू हाईलाइट एमथी हला फॉर इंडिया द मेकिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी was a long process whose roots can be drawn from ancient era माने आमे बुझी परिया जे nationalism is based on the principle of or the concept of national identity एटा हो सेकंड पॉइंट हां ना नहीं से कोन बोला देखो ना nationalism is rooted in the popular principle nationality तो nationality माने कोन ना मु कहबे nationality रो मीनिंग होते सेकंड लाइन डिफाइन है जे इंडिया पय national identity जो अछि ताकू कहउछन प्रिंसिपल ऑफ nationality तो इंडिया रो national identity केमि क्रिएट हला से पचार कहे तार रूट अच्छी हिस्ट्री रे कौन ना लिखा है इंडिया हैज बीन रूल्ड बाय मेनी एम्परर्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड इट वाज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द कांसेप्ट ऑफ नेशनलिटी इमर्ज्ड अमंग देम माने इंडिया रे कांसेप्ट ऑफ नेशनलिटी जो अच्छे सेटा पॉपुलर जे हिची कि माने कौन मेजर पावर को आसी इन्फ्लुएंस हला केबे 19th सेंचुरी रे एटा होची मेन पॉइंट जानि बेलो एमदी लिखियो अच्छा तापर कौन लिखिबा देखो लिखाई चाहिए it gave rise to just a second it gave rise to national consciousness okay people had a desire to get the identity of a nation माने हमर इंडिया रे जतले 19th सेंचुरी रे कोन हला नेशनल आइडेंटिटी आसला ता द्वारा कोन हला ना नेशनल कॉन्शियसनेस रो भावना आसला the major reasons behind this were the economic social and political factors ये देखिबा एटा मेजर लिखिछि इफ इट इज सेइंग दैट देयर आर द मेजर रीजंस माने एटा ऑथर त कोन करछि हाईलाइट करछि पढि देबा तापर जेबा पीपल डिस्कवर्ड देयर यूनिटी इन द स्ट्रगल स्टोरी एंड विथ द हेल्प ऑफ नेशनलिज्म दे गॉट फ्रीडम elaborating on the concept of Indian nationalism the encyclopedia on social science says India is a nation in which the Hindu religion served as a cohesive traditional cohesive meaning hala unifying traditional element uniting people of various languages and India achieved national unity through the influence of Western ideas, notably those of British origin and in the struggle against British rule. So, the first, what is nationalism? What are the characteristics of nationalism? What nationalism does in India? Now, nationalism led to the growth of national consciousness in the 19th century due to a combination of political and socio-economic factors. Sorry, Allah. तापरे कौन लिखिया जे इंडियन नेशनलिज्म इन द एंशिएंट एज वाज शेप्ड बाय द हिंदू रिलीजन व्हाइल इन द मॉडर्न एज इट वाज द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडिया दैट सॉलिडिफाइड और गेव इट अ ग्रेटर वॉइस फिनिश तो देखि पालो प्रेसिड आराम से हे गला ना नहीं फर्स्ट कौन करिया टॉपिक टा देखिबा मेन आइडिया को हम हाईलाइट करिबा कंक्लूजन को देखिबा ए तीनटा को लिंक कर लिखिबा वर्ड लिमिट अनुसार यू कैन डू इट नो आराम से करि परियो इजी अछि ना नहीं दैट इज मैन आराम से होबो एटा क्लियर सो इफ यू हैव एनी डाउट तुम डाउट और सर एटा बुझी पाने को टॉपिक पे किस दियन यू कैन शेयर व्हाट्सएप रे तुम सॉरी व्हाट इज दैट यूट्यूब रे तुम मते कुह को टॉपिक पे कोन प्रॉब्लम अछि ओके आई विल टेल मो कहि देब तुमको ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड लगा जे ट्रांसलेट द गिवन पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया चलो करिबा फ्रेंड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इंटीग्रल अविच्छेद्य ओके एमदी आसीबो टू डेवलप ए ट्रू माने गोटे ट्रू माने कौन वास्तविक सचोट फ्रेंडशिप डेवलप करने को हेले रीजन को बताऊँ ना नहीं आमे फ्रेंड्स मान को केमते ना स्नेह और सम्मान सहित व्यवहार करिया कथा तुम लिखि दे परिबो एटा ओके
इन दिस वे यही भाव में फ्रेंडशिपटा कौन हम चिरस्थायी हम बोली लिखिपर विल लास्ट लॉन्ग हाँ ना नहीं चिरस्थायी माने परमानेंट हो तुम लिखिपर लास्ट लॉन्ग मीनिंग ये कौन परमानेंट हो तार मीनिंग कौन हम परमानेंट कम इटर्नाल माने चिरस्थायी एमती मुझे कहली सब बेले रहीपर लिखिपर देयर इज ए फेमस प्रोवर्ब रूढ़ी अच्छी कौन कि लोकवाक्य अच्छी तुम जहाँ भी कहीपर फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डेट माने कौन विपद बंधु ही वास्तविक बंधु वास्तव अर्थ रे बंधु एमती लिखिपर तब लिखाई इट मीन्स दैट दो वी मे हैव सेवरल फ्रेंड यह स्पष्ट करे जे कौन आम पाखे जदिओ अनेक बंधु थी पारती कौन प्रॉस्पेरिटी माने कौन हम भल समय लिखा मेनी डेजर्टर्स डेजर्टर माने कौन आम धोखा देके पड़ाती छाड़ी दिखाती परित्याग कर दिखती केतबेले जेतबेले प्रतिकूल परिस्थिति आसे जानीपार अनुकूल अनुकूल परिस्थिति बहुत सांग मैंने पाखे था मात्र प्रतिकूल परिस्थिति बहुत लोग आमको छाड़ी पड़ाती एमती लिखिपर तुम वी कैन एग्जामाइन मीनिंग है परीक्षा कर सिंसियरिटी ऑफ ए फ्रेंड ड्यूरिंग आवर हार्ड टाइम्स ये पढ़ा आमर कष्ट कि प्रतिकूल समय आम गोटे सांगर कौन वास्तविक सिंसियरिटी माने कौन ऑनेस्टी ओके सचोट पणिया को आम परीक्षा कर जापर परखिपर लिखिपर परीक्षा कर लिखे परखिपर ये लिखा बेटर हम तापर ओनली ए सिंसियर एंड फेथफुल माने कौन लयल हम तो लिख केवल गोटे कौन सिंसियर मीनिंग मु कौन कही ये सचोट सांग रिमेन्स विथ अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल इजी सेंटेंस तुम कर ऑल अदर बाकी समस्ते आमको त्याग कर दियंती फ्रेंडशिप इज एस्टाब्लिश माने सुदृढ़ हुए ओवर द सैक्रिफाइस लव फेथ एंड कंसर्न ऑफ ईच अदर परस्पर प्रति प्रेम सैक्रिफाइस जानी पारे फेथ विश्वास ओके रे कहवा कौन आम फ्रेंडशिप बंधुता सुदृढ़ हुए एमती लिखिपर इन इंडियन माइथोलॉजी कौन भारतर धर्म ग्रंथ लिखिपर कि गपर इतिहास जहाँ भी लिखिपर कौन अच्छे वी कैन फाइंड आम पाइपर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप वास्तविक बंधुतार अनेक उदाहरण पाइपर ऑल ऑफ अस हैव हर्ड आम समस्ते शुणीचु द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा लिखिपर सुदामा वाज ए पुअर ब्राह्मण एटा तो निजे कर ना नहीं जड़े गरीब ब्राह्मण थे हिज कंडीशन बिकेम सो इम्पोवरिश तांको अवस्था एते दरिद्रता और शोचनीय है जे से निज परिवार पे खाद्य संजोग कि जोगान करिपारु नथिले एमती लिखिबे देन ही डिसाइडेड तापर से डिसाइड कले गो टू द्वारिका टू मीट हिज फ्रेंड आम एटा को कौन ट्रांसलेशन इजिली करिपारे बिकॉज इट इज इजी गेटिंग इट तर कौन लिखा है चाइल्डहुड फ्रेंड कृष्णा व्हेन ही रिच द्वारिका जिते से द्वारिका पहुँचले से अनुरोध कले द गेट कीपर द्वारपाल को से कृष्ण को भेटापी अनुमति दो बोली हो पार आज ही वाज ड्रेस्ड डर्टी जेहेतु तांकर कौन ड्रेस ड्रेस माने कौन हम परिधान परिधान कौन थिला मलिन कहीपर ना डर्टी अच्छी ना द गेट कीपर द्वारपाल परमिशन देलानी तुम लिखे देलानी बट ही रिक्वेस्टेड सेवरल टाइम्स एंड आस्क्ड द गेट कीपर टू इन्फॉर्म कृष्णा दैट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड वाज देयर टू मीट हिम एकदम इजिली कर दे पारिबो हाँ ना एटा स्टोरीटा अच्छी लगे फाइनली द गेट कीपर शोड मर्सी दया खाई कौन सेंट द मेसेज कृष्ण पाखु कौन वार्ता पठाइला मेसेज मीनिंग हम कि खबर हो पार ऑन हियरिंग द न्यूज जिते से शुणिले ऑन हियरिंग मीनिंग हो व्हेन ही हर्ड तो जिते कृष्ण शुणिले एमती लिख कृष्णा केम रनिंग दौड़ी आसिले एंड वेलकम्ड हिम विथ ओपन हार्ट खोला मन स्वागत जनइले लिखिपर ही ऑल्सो हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली बाय गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ वेल्थ सिमिलरली एभली भाव में कौन लिखाई देयर आर वेरियस स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन मैथोलॉजी इजी क्वेश्चन थिला एटा इजी पैसेज थिला एटा कौन अच्छी ना खाली कृष्ण सुदामा स्टोरीटा फ्रेंडशिप उपर अच्छी इजिली यू कैन से यस और नो तो बर्तमान जी नेक्स्ट को एटा आसीबो कोठी ट्रांसलेट द गिवन पैसेज फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश गुड स्टॉप चलो एटू स्टार्ट करवा कौन लिखाई है देखिल क्या मोर जन्मभूमि बोली कहबी किए क्या कह मु क्या मोर जन्मभूमि बोली कहबी एमती बुझ सो ये आंसर कौन हम टू होम क्या कही ना विच टू विच फ्रॉम विच प्लेस ना टू होम शाल आई कॉल कि एड्रेस एज माय मदरलैंड हाइफेन को हाइफेन देव यही विशाल पृथ्वी दिस भास्ट अर्थ विशाल एशिया दिस ह्यूज
continent of Asia. Okay, विशाल भारत वर्ष, this vast country called India. एमती लिखिबो देखो, this vast India होल लिखि देबो, this vast country called India एमती लिखिबो. Sounds good ना? ओडिशा देश, the state of Odisha, बा माने और my birthplace पल्लीग्राम, village, the village of पल्लीग्राम एमती लिखे सुंदर लागुची. एमती बार तो बुझे लिखिबो पड़ी. तब लिखा हबो एमानंक मध्यरु कहा ठारू विच्छिन्न हेई नथिबारु व्यापक अर्थरे एई समस्ते मोर जन्मभूमि हेले हैं मातृगर्भरु पड़ी जेउठारे प्रथम भूमि स्पर्श कली जेउठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली विषम विपाक बेले जो अंचल फल पुष्प शाक तंडुल ढाली दे शिशु प्राण को परिपुष्ट कला सही पल्ली ही मोर जन्मभूमि. लॉन्ग सेंटेंस अच्छी तो से कही कौन ना अथर कही एमानक मध्यरु माने जेतिक सब आग प्रथम लिखाई सेमानक कहा सहित मध्य से कौन होला अलगा नुह स्टिल हेले भी व्यापक अर्थरे जो मोर जन्मभूमि जोटी मु प्रथमे कौन है जन्म नेली जी मते पालिला जार रूप रस गंध को लेकिन पालिला मते सेटा को ही मोर प्रकृत जन्मभूमि हम ये जिनसा को रिप्रेजेंट करार अच्छे. तो कौन लिखा जब प्रथम लिखी टू होम आई शैल कॉल और एड्रेस ऑफ माय मदरलैंड दिस vast earth, the vast continent of Asia, the vast country of India, the state of Odisha, or my कौन native place पल्लीग्राम एमानक मध्यरु कहा ठारू मध्य विच्छिन्न हेई नथिबारु व्यापक अर्थरे ए समस्ते मोर जन्मभूमि हेले हैं. लेकिन ऑल्दो इन ए जनरल और ब्रॉड टर्म व्यापक अर्थर मीनिंग एटी कौन ब्रॉडली स्पीकिंग कहना ना ऑल्दो जदियो अच्छे ना हेले हैं माने कौन कॉन्ट्रडिक्शन आसला. तो ऑल्दो ब्रॉडली स्पीकिंग आई एम इंटिमेटली connected and never dissociated from any of these yet contradiction asla although but yet the place where I first set foot from mother's womb asili ho na nahi where sorry जे ठारे लिखा है ना ओके where रूप माने कौन है फीचर्स रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पहले where I derived my first identity ओके तापरे विषम विपाक माने कौन होची in times of difficulties कहि परिबो जो जागा रीजन में ना in times of difficulty the region which परिपुष्ट कला माने कौन nourished me by providing फल माने कहि परिबो fruit flowers साग तुम जानी परिबो सब लिखि परिबो greens etc nourished me that region or that village in the real sense is my motherland. सरियला कांसेप्ट एमदे लिखिबो तापर आगो जेबा सही मोर मत दिस इज माय ओपिनियन लिखिबो धात्री एवं शिक्षयत्री धात्री माने कोन मदर शिक्षयत्री माने कोन टीचर. So that region is my motherland. It is my opinion that that region is my mother and my teacher. सरला किंतु माने बट समय स्रोतरे माने कौन इन कोर्स ऑफ टाइम एमती बुझिबो निस्सहाय शुष्क तृण परी मु भासी चलीचे बट इन कोर्स ऑफ टाइम आई हैव बीन एज हेल्पलेस एज ए ड्राई फिग भासी चली ना नहीं फ्लोटिंग स्विमिंग लिखि दो सेमती लिखिबनी ओके इट इज एन इडियम मोर जन्मभूमि को फेरी जीवा मोर नैतिक साहस नहीं आई हैव नो मोरल फोर्स टू रिटर्न टू माय चेरिस्ड मदरलैंड एंड लिखियो तो कौन लिखला यह भितर मोर पुनर्जन्म घटे सारी आज मु तार रूप को जाति स्मरण खाली स्मरण करे यही भितर माने इन दिस टाइम्स आई हैव कौन अच्छे टेकन बर्थ और आई हैव एक्सपीरियंस रीबर्थ एंड नाउ आई कैन ओनली रिमेंबर और कौन रिमेंबर इट्स मेमोरी लाइक ए जातिस्मर कौन कहते रेफ्यूजी कही पार ना नहीं एमती सेन्स वाटा आसो जापर जे जगह छाड़ी पलि आसी जे तार कौन स्मर मैंने कौन भूली जाइए ना
ए सेंस रे व्हाट यूज करिवो जानि पालो तो एमिति तमे कोन कर परिवो ना पैसेज को ट्रांसलेट कर परिवो क्लियर ना वर्तमान जिबा हमें कोठी के ऐसे टॉपिक को जिबा व्हाट इज रिटन हियर ड्रीम ऑफ स्मार्ट सिटीज टीनेज सुसाइड व्हाट इज द सॉल्यूशन तापर हम कांसेप्ट कर ह्यूमन क्लोनिंग टैकलिंग द मॉरल डिलेमा सो लेट अस डू इट चलो एटा पढिबा फर्स्ट टाइम एटा देखिबा ह्यूमन क्लोनिंग ऊपर लिखियो दिए तार टॉपिक कोन रखिबो टैकलिंग द मॉरल डिलेमा तो फर्स्ट लिखिबी व्हाट इज ह्यूमन क्लोनिंग कोन फर्स्ट टाइम लिखाबो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग फर्स्ट एटा लिखिबो क्लोन माने कोन कॉपी करिवे तो ह्यूमन क्लोनिंग टा कोन ना एटा गोटे साइंटिफिक प्रोसेस किबा गोटे साइंटिफिक फील्ड ऑफ स्टडी ऊपर लिखिबो मेडिकल साइंस रिसर्च द्वारा एटा हला ड्यू टू एडवांस इन मेडिकल साइंस एटा बढ़िला तापर हम जानिबा व्हाई ह्यूमन क्लोनिंग आमे क्लोनिंग कोन पे करू आर तीन चारटा रीजन अछि कोन रीजन हे परियो फर्स्ट लिखिबो साइंटिफिक रिसर्च लिखिबो मेडिकल नेसेसिटी आर एग्जांपल दे लिखिबो मेडिकल नेसेसिटी कौन गोटे लोकर हाथ ना मे भी आम कौन कर ना स्टेम कर नुआ आर्टिफिशियल हाथ लगे दे पार बेटर हम ना नहीं तो जीवन टा बचो तो रिसर्च मेडिकल नेसेसिटी आम कौन कर ना ह्यूमन क्लोनिंग आने ताले एटा जो आसीबो ह्यूमन क्लोनिंग रे व्हाट इज द मोरल डिलेमा इज ह्यूमन क्लोनिंग टा सक्सेसफुल हबो ना नहीं देयर इज नो गारंटी जेहेतु कि गारंटी नहीं तेणु हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेथ एटी तुम रखियो फर्स्ट क्लोन एनिमल जे कोन डॉली द शिप इट वाज फर्स्ट बट से फर्स्ट क्लोनिंग सक्सेसफुल हबा आगरो हजार हजार लोक मरि आइचंदे डॉली so is it not a moral dilemma so you want to beget life but for that purpose you are sacrificing an almost unlimited lives हाँ ना नहीं तो what is the result what is the effect तो कौन होची ना moral dilemma रे तुम एटा लिखियो जे गोटे ह्यूमन क्लोनिंग जो आम एक्सपेरिमेंट करूँ इट इज ए रिस्की इट्स नॉट ए फेल सेफ प्रोसीजर आर किसी कौन हम ना डेंजर टू लाइफ रहिबो सो जदि गोटे क्लोनिंग करिवो एंड इफ द रिजल्ट इज अनसक्सेसफुल जो अन्य लोक माने ड्यू टू योर फॉल्स सेंस ऑफ मेडिकल नॉलेज जदि लोक लाइफ मरी जाती ताले एटा कौन हम फैमिली लोक केते बड़ गोटे कौन दुखर गोटे हो पार गोटे कौन दुखर गोटे ओकेजन हो पार सो हु विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट so is it worth it this is the moral dilemma एटा बोले तमे एटी एलाबोरेट करो टॉपिक टाको ताले व्हाट इज द सॉल्यूशन the solution is we should consider human cloning in a positive light and as per its present status वर्तमान तार रूल गुडाक कौन हो ना अति रिस्की को न जाए कि फर्दर स्टडी इज नीडेड बिफोर इट कैन बिकम ए फुल फ्लेज्ड मेडिकल प्रैक्टिस तापर ए जिनस लिखिबो तापर आमे कोन करबा एटी डिलेमा गोटा कोन रहला मोरल डिलेमा रहला ताप में लेजिस्लेशन करिया पड़िबो सोसाइटी को सिंधी अवेयरनेस क्रिएट करिया पड़िबो आजकल तो देखो ब्लड आमे जतरे दउचु ब्लड देला मध्ये आजकल इवन विलेजेस रे प्रॉब्लम होची ना नहीं हिंदू मुस्लिम एटा देखि रे ब्राह्मण होची ना मु देबेनी ब्लड एमते के जण चलचंदी ऑर्गन डोनेशन रे प्रॉब्लम अछंदी तेणु तुम ये जतरे क्लोनिंग टा करूच क्लोनिंग करने मान जदि किसी रिसर्चर्स और वॉलंटियर्स मान दरकार पड़ो सो दे हैव टू ओवरकम सोसाइटी टैबूस एटा को लिंक करी तुम कंक्लूजन दब यू हैव टू राइट लाइक दिस गेटिंग इट तो टॉपिक टाइम तो रहबो तमरो एटा ह्यूमन क्लोनिंग करा नेक्स्ट टाइम देखिबा टॉपिक कोन करबा टीनेज सुसाइड व्हाट इज द सॉल्यूशन मार्क कर दियो अच्छा ये टीनेज सुसाइड रे आई वाज जस्ट करेक्टिंग सम खाता ओके सेटे मो लिखले टीनेजर्स आर जनरली चिल्ड्रन रियली तुम एमती लिखिबो कि हाँ तो टीनेज सुसाइड कौन लिखि व्हाट इज द सॉल्यूशन तो फर्स्ट जिंस व्हाट इज टीनेज सुसाइड ना एडा होची गोटा कोन गोटे सीरियस इश्यू तो फर्स्ट तुम लिखिबो एडी टीनेज सुसाइड इज ए कोन इज एन एक्सट्रीमली serious problem that has emerged stronger
ड्यू टू ये हूँ इम्पोर्टाट पॉइंट मॉडर्न लिविंग आमर आगकाल सोसाइटी रे आम तो राक्षस मान को मारिया पड़ूला आजिकल लोक मैंने निजे निजे मरी जाती तो ये गोटे पॉइंट तुम मन रखा पड़ो दे आम टीनेज सुसाइड कनसेप्ट हूँ ये गोटे प्रॉब्लम दैट इज द कौन इमर्ज्ड स्ट्रंगर ड्यू टू द मॉडर्न लिविंग लगे हूँ ना नहीं प्रॉब्लमटा सो what is this ना it is actually a symptoms of all the wrongs okay that are there or the defect are there in the modern hectic lifestyles as a result of which our teenagers who are the future of our nation have to think of this drastic step एटा बुझिया पड़ो तापरे आम कौन करे ए कॉन्सेप्ट एलाबोरेट करिया पूरा सॉल्ट पेपर पके कौन लिखिया आम लिखिबा टू एक्सप्लेन और टू एलाबोरेट और टू अंडरस्टैंड the shoddy reality of teenage society. We have to understand that modern living has taken an extremely negative psychological toll on us. Family, the fabric of social structure has broken down. Parents, in the quest for money, have abandoned their children to housekeepers. So there is no one with whom the children can form a personal bond and a connection. They are alone in their moment of isolation. And society has also become competitive from school to colleges to career pressures. Okay, so a single adolescent child aged in the group of 17 to jaha mate likhibo cannot summon the courage. He cannot find the companionship which will help him to face this challenge. तो ये challenge में कौन होचे ना टीनेज माने कौन होचन लोनलीनेस में सुसाइड करछन एडा पॉइंट लिखलो इंट्रोडक्शन देला तापर टीनेज सुसाइड रो कॉज उडा लिखिबो कॉज उडा कोन ना गोटे लिखिबो फैमिली आइसोलेशन सोसाइटी प्रेशर स्कूल रो एजुकेशनल प्रेशर ओके कैरियर एम्बिशन तापर कैरियर फेलियर इन एम्बिशन लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग डिप्रेशन ए पांचटा पॉइंट लिखी तू टीनेज सुसाइड रो कॉज उडा लिखियो सैला तापर व्हाट इज द सॉल्यूशन जे कोन काउंसलिंग दरकार पिला मानको एकला रखिबा नाही पिला मानको मोटिवेट करबा पिला मानको कोन एथिकल वैल्यू ट्रेनिंग मध्ये देबा इंस्टेड ऑफ ओनली स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड मोरल फैब्रिक स्ट्रांग रहबो सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहबो पिलाटी कोन हबो कोन हेल्दी इंडिविजुअल रूप रे ग्रो करबो इन धरे टॉपिक को एलाबोरेट करबो यू कैन राइट इट गॉट द आइडिया ना आइडिया ढा एमती तापर जेबा एक नंबर को व्हाट इज द टॉपिक रिटन हियर ड्रीम ऑफ स्मार्ट सिटीज मिथ और रियलिटी चलो एटा लिखिबो केमते ड्रीम ऑफ स्मार्ट सिटी आर मीनिंग हो जे as India is developing do India needs smart cities yes a modern India needs modern cities and a modern infrastructure तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए द ड्रीम ऑफ स्मार्ट सिटीज माने लिखिबे जे फर्स्ट कोन इंडिया एटा ग्रो करूची इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री तने फर्स्ट पॉइंट एटा कोन लिखिबो एटी मिथ और रियलिटी में लिखिबो स्मार्ट सिटीज आर एसेंशियल फॉर ए स्मार्ट विजन ऑफ इंडिया as growing जेतले 21 रो आगु सेंचुरी के जाउचे when we have just become the third largest economy in the world so it is an obligation on us to provide a better infrastructure for the country not only to its people so that they can enjoy a better quality of life but also to project the nation's pride and economic prosperity on the world stage एथि पे गोटे कोन दरकार आम सब लोक दुबई को जाऊँ कहीं वन थिंग दैट अट्रैक्ट्स अस द इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज द आइडिया ऑफ ए ड्रीम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स ए सेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड ईज एंड कंफर्ट ऑफ लिविंग इट ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट्स ए सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल तेणु तुम से कौन लिखो ए सेंसर लिखो तो ड्रीम हूँ कौन ना आम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में दरकार ना नहीं एंड व्हाट इज द स्कोप कहीं आम करवा ना जिते आम गोटे ड्रीम सिटी गोटे ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर देवा आम लोक मान गोटे कौन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करने सुविधा देलु तापर आम कौन देलु ना गोटे आम जेन दुबई के जाऊँ दुबई को देखिले आम खुशी लगे कौन बाह ये म्यूनिसिपालिटी काम कर ट्राफिक नहीं रोड गुड़ा नीट एंड क्लीन लोक मैंने केते भल से गोटे सेंस वर्थ गोटे कंट्री नेशनल वर्थ तार अट्राक्टिवनेस इंडेक्स जहाँ को कहती पॉपुलैरिटी इंडेक्स गोटे फेवरेट डेस्टिनेशन से सब बढ़ी बढ़ी लोक मैंने करेंगे तापर लोक मैंने कौन आसवा पसंद करेंगे गोटे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम ना नहीं तुम एमकर कह आमर दुबई में जमी मैंने कौन थी भाव आम से ऑयल थी ओके इंडिया रे ऑयल अच्छी
अच्छा दुबई को मुझे से ऑयल कलर देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगी अच्छी ऑटो गाड़ी सेक सब रेडी होती तू खाली पैसा लगा 2 मास तू माने 2 वर्ष कौन कर पैसा डबल कर तू उठिक जीवु तो से आम इंडिया आसबू तो देखला बेलू कौन माटी तले थी ऑयल म्यूनिसिपालिटी 3 दिन कम कर तो किसी गवर्नमेंट रूल न तू आसबू ते कहब जे तू आग पैसा दे 10 वर्ष टाइम देली 5 वर्ष लगे खोलिकी तू इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करे तापर पैसा लगा आउ 10 वर्ष तू कौन करू धरिकी जा एत समय से कौन वेट कर बुझीपार द इकोनॉमिक रीजन आम इंफ्रास्ट्रक्चर कले कौन हुए ना गोटे जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जब ऑलरेडी रेडीमेड थी लज गुड़ाक सिंपल थी मैंने से गोटे फेवरेट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रूप में आसपार से आसा द्वारा कौन हम प्रॉफिट आगू नब आदि इंफ्रास्ट्रक्चर नथिबो तो रिसोर्स थिले मते डेवलप हो पारिबनी आफ्रिका को देखुन आफ्रिका को एंड कौन करबा आमे दुबई को जदि आमे तुलना करिया प्रॉब्लम कौन अछि ऑयल तो 2 जगह अछि द चांसेस इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक एंगल एमते लिखिबो एमती करके इंफ्रास्ट्रक्चर को तमें हाइलाइट कर स्मार्ट सिटी रे जदि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आम क्रिएट कर तो सबुआडू कंट्री प्रोग्रेसटा हम बुझिपारे ना नहीं तापर व्हाई इट इज ए मिथ और रियलिटी ना कहबे जे भाबा होची गोटे जिनस ताको इम्प्लीमेंट करिया होची द्वितीय जिनस तो इंडिया रे ड्रीम सिटी प्रोजेक्टटा काहे मिथ बोली कहा जाओ कारण इंडिया रे गोटे फर्स्ट प्री प्लान सिटी प्रोजेक्ट जहाँ को कहा जाए लाभासा यू मस्ट हैव हर्ड इट व्हाट हैपेंड टू दैट प्रोजेक्ट इज एक्चुअली कौन फ्लॉप हो गला What was the reason? Many. One of them was environmental clearance मिलची ना नहीं तो एटा को एग्जांपल माध्यम रे देई तमे कोन लिखि परिबो जे इंडिया रे आमे विजन करछु पेन एंड पेपर इज ऑल राइट पर ताको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करले सिटी करिया को रहले प्रॉब्लम रहउची काहे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नाही लीगल एंगल रे रेस्ट्रिक्शन रहउची तापरे जमी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस टा क्लियर नहीं बुझि परछो तो यही सब जिनस जाक अच्छे विच इज एक्चुअली हैम्परिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री तो इंडिया रे जदि हमर ड्रीम को हम गोटे रियलिटी रे कन्वर्ट कराक अच्छे माने दिस बॉटलनेक दिस चैलेंजेस आपको सॉल्व करिया पड़िबो नेक्स्ट इज हाउ टू सॉल्व तापर एलाबोरेट कर हम लिखिबो दिस इज हाउ यू शुड राइट गॉट द आइडिया तो आज टॉपिक एतिक रहिला आज हम एतिक रे शेष करिया क्लास नेक्स्ट क्लास आई विल सी यू अगेन टिल देन गुड बाय।